हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12 में उसी में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सेक्शन बी था उसका हमने रिवीजन कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो सेक्शन सी है उसका हम रिवीजन करेंगे। तो सेक्शन सी के जो क्वेश्चन सीखे वो आपको जो आपके चारों चैप्टर्स जो आपको आने वाले हैं यहाँ पे 4th, 5th, 6th, 7th उसमें से आएंगे। तो हम यहाँ पे चारों चैप्टर के सेक्शन सी का रिवीजन हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 का जो रिवीजन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ बॉडी एंड प्लानिंग इज अ सोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, एक्सप्लेन। द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज दैट फॉर्म टू एनेबल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हम फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जिसके थ्रू हमारा जो भी प्लानिंग है वो इफेक्टिव हो सके, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। द ऑब्जेक्टिव which are determined at the time of formation of the organizing process are methodically applied, and for the same organization is inevitable. Hence it can be said that management is a brain of business enterprise and planning is a soul of organization, that its body। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, distribution of authority and responsibility is a base of an organization, explain this। Organization delegate authority and responsibility among various departments and persons, divisional heads, subdivisional heads, and skill-based heads, and finalize and then authorities. All the heads should be given power and responsibility so that they can perform their work as well. In addition to that, clarification should be done of each person's post so that each person will get the idea about the responsibilities assigned, and it is also necessary to have proper proportion of power and responsibility। अब ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी ऑथोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सारी हम वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई उसके बारे में हम बताते हैं। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन। The organization formed as per the procedure is called formal organization. Linear organization, functional organization, matrix organization is called a formal organization। मतलब कि जो हम फॉर्मली प्रोसीजर के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे आपको उसके एग्जांपल्स देंगे। इन सच अ ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन एज पर द प्रोसेसर। अब यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फॉर्मली हम प्रोसेसर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर्मुलेट एज पर द प्रोसेसर बट इट इज परफॉर्म ऑन स्पोर्शनरी। अब यहाँ पे खुद की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होता है। वेन एवर पर्सन्स कम इन टू द कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर interrelationship, informal organization come into existence. In such a structure of formal organization, it is created on its own. It's shown our such a relation among the persons working in the organization which are not based on procedure or rules but based on their personal wings, approaches, interest, and etc. According to the Hicks and Geller, informal organization is a shadow of formal organization. It arises in formal organization. Informal organization cannot be exist without formal organization. Thus the formal and informal organization are complementary to each other। अब यहाँ पे formal relation अगर हमें बनाए तो सबसे पहले हम informal relation बनाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि informal relation and formal relation are complementary to each other। Thereafter next question is, what are the limitation of matrix organization? The limitation of matrix organization are, in this organization employee gets an order and instruction from the project manager and on department head। Since the principle of uniformity is broken, कि यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या होता है कि डबल ऑर्डर्स हमें मिलते हैं, इसलिए यूनिफॉर्मिटी जो है ऑर्डर्स में नहीं होती है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, हिंस दिस स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स एंड difficult। Third is the issue of regarding coordination cooperation rise in the organization. This is an expensive organization. In this organization, delay occurred in taking decisions
Last is in this organization issue arise relating to the frictions among project and managers and linear officers. अब यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑर्डर्स देते तो कभी कभी कन्फ्यूजन्स होता है, एज वेल एज जो है वो कॉस्टलियर भी है ये, और जो डिसीजंस एंड कोऑर्डिनेशंस जो है वो वर्कर्स के बीच में नहीं हो पाता है. लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल. इन द लार्ज एंटरप्राइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मे बी इंस्ट्रूमेंटल टू सक्सेस. Whenever there is a need for reducing burden from top level managers, variety become necessary. Development of managers become necessary and motivation needs to be encouraged. Decentralization become necessary. Decentralization is not a proper or suitable for organization where it is to be formed or small base, and it is also essential to maintain business secrets very strictly. अब यहाँ पे informal organization में क्या होता है कि हमारे decentralization में अगर एक बड़ा डिपार्टमेंट है तो हम यहाँ पे सारा काम जो है वो वर्कर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं है. इसलिए हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो मोस्टली बिग इंडस्ट्रीज में होता है. तो यहाँ पे ये हमने चैप्टर नंबर 4 का हमने सेक्शन सी किया. अब हम चैप्टर नंबर 5 का सेक्शन सी करते हैं. अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन ने स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द प्रोबेबल एम्प्लॉयज एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर जॉब, वाइल सिलेक्शन इज सच अ प्रोसेस थ्रू अपॉर्चुनिटीज appropriate a candidate is selected out of the number of candidates who applied for the work of the organization. The main object of recruitment is to encourage more and more candidates to apply for the work to the executive of by organization. The objective of selection is to select the most appropriate candidate. There is no restriction over the number of recruitment. In the selection, it is always for the certain predetermined number of employees to be selected. Then after, the first phase of selection process is recruitment, and selection work is always done after recruitment. Last point is recruitment is positive process and selection is negative process, because यहाँ पे हम limited number ही select करते हैं. उसके बाद का next question हमें यहाँ पे दिया हुआ है, State the internal and external source of recruitment. Internal sources are promotion, transfer, friends and relatives of employees, recalling retained employees, promotion with transfer and waiting list, while external factors are through advertisement, through employment exchange, through education institutes, through trade and union, through candidates recruitment aid kit and through modern methods. तो ये यहाँ पे internal and external sources दिए गए हमें. Then after next question is what is development. Development is a process of imparting theoretical and practical knowledge to the top level management and departmental heads. The term development refers to program which helps to achieve the pre-decided objective of organization by improving the capabilities of head. अब development हम किसे कहते हैं कि जो theoretical and practical knowledge हम top level management को provide करते हैं उससे. What is recruitment? Recruitment is a continuous process. Recruitment is to be made when a new enterprise is established, when current existing unit is expanded, or when an employee resign or retired. In ordinary sense, recruitment is a process of looking for the probable employees and making them apply for the job. यहाँ पे हमें recruitment का meaning दिया हुआ है कि हम जब भी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट होता हो या एक्सपांड होता हो या कोई करंट जो एम्प्लॉयज है वो रिज़ाइन होते हो, रिटायर होते हो, तब हम क्या करते हैं कि जो पर्सन्स के अपॉइंटमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. In a broader sense, recruitment is the process of acquiring the right time, the right number, in the right place, persons with the right qualifications. Then after next question is give the meaning of training. In a general term, training means providing theoretical and practical knowledge with reference to the work of employees. As stated by the expert, training means giving up-to-date information about the organization and also to increase efficiency, skills, aptitude and technical skills of the employees. In short, training means imparting knowledge and education with the object of gaining proficiency in the work. अब हम जो वर्कर्स को एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग, और उसके थ्रू उनकी इफिशिएंसी, उसकी स्किल्स में हम इंक्रीमेंट करते हैं, ये दैट इज अ ट्रेनिंग. उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. The stages of process of selections are as follow: welcoming and primary meeting,
receiving and screening of applications. Third step is taking necessary steps. 4 is personal interview. Fifth step is checking reference. Sixth is preliminary selection. Seventh is physical examination. Eighth is appointment letter. Ninth is introduction into the organization and allotment of work. तो यहाँ पे ये जो स्टेप्स है, ये सारी सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप्स दिए गए, ये हम फॉलो करते हैं. उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म वेटिंग लिस्ट. A waiting list is a list of candidates who had applied in the past could not be absorbed. Such a list is useful for the recruitment at a later date. It helps to avoid the advertisement and recruitment process all over again. As and when required, candidates can be recruited from this list as per the merit. अब यहाँ पे लिस्ट दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स पहले अप्लाई कर चुके बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जो लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ वेटिंग लिस्ट. और इसके थ्रू हमें कोई भी अगेन इन अगेन रिक्रूटमेंट एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्टाफिंग इज़ नॉट अ मैरिज एंड एम्प्लॉई वेलफेयर एक्टिविटीज़. वाई? Then our answer is staffing is not only a staff welfare activity but it is related to obtaining employees, training them, maintaining them and developing them. कि यहाँ पर staffing क्या करते हैं, हम workers को appoint करते हैं, उन्हें maintain करते हैं, उन्हें develop करते हैं. Staffing thinks over a various issues like employees, recruitment, selection, training, development, promotion, transfer, post-retirement benefit, etc. Thus, it is think over various issues related to the employees. It accepted human elements. It worked for the providing standards of living, social status, etc. to the employees. Then after, our next question is, what can be known through IQ एंड एप्टीट्यूड टेस्ट. अब यहाँ पे IQ एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से हम क्या पता कर सकते हैं? थ्रू IQ टेस्ट कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, memory power, thinking power, decisions, etc. can be known. And through aptitude test, candidates' interest for the work for he is selected can be known. अब यहाँ पे IQ टेस्ट से हम उसकी थिंकिंग पावर, उसकी डिसीजंस पावर के बारे में जान सकते हैं. एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू हम उसका वर्क के रिलेटेड बिहेवियर कैसा है, जो उसके लिए हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में हमें इजीली इंफॉर्मेशन मिलती है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what can be known through trait test and psychological test. Through trait test, it can be known that the candidate has a particular knowledge and ability about the function he is supposed to execute. And through psychological test, candidate's nature, self confidence, approaches and habits can be known. अब यहाँ पे trait test के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि उसको पर्टिकुलर वर्क के रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं है, और उससे जो हम वर्क असाइन करने वाले हैं उसके रिलेटेड उसे नॉलेज है कि नहीं है. बल्कि अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसके जो कॉन्फिडेंस अप्रोचेस है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली हमें मिलती है. तो ये थे हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के जो हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चंस थे वो. आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन सी किया. इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 है उसका सेक्शन सी का रिवीजन करेंगे. आपको ये जो सेक्शन सी जो है वो भी आपको आपकी नोटबुक में एज अ रिवीजन जो है वो आपको लिखना है. इन द नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन करेंगे. थैंक यू.